Okay, so good evening. Pen kode gala. Start kariya. Good evening, everyone. Good evening, Gupti Samrat. Good evening, Vijay. केमती अच्छो सब रिजल्ट बाहरी जाइए बाय द वे सिविल सर्विस जो होता है इंटरव्यू रिसेंट सो जो माने भी प्रिलिम्स दौच एथर जून 7 रे आई होप तुम मान का ना भी नेक्स्ट ईयर ए लिस्ट रे थाओ ओके आई प्रे टू गॉड कि तुम मान का ना भी थाओ एंड जो माने ताई आरो वर्ष दबो माने 2027 ने देन से लिस्ट रे भी से वर्ष जो माने देबे तुम मान का ना थाओ ओके चलो सो विल स्टार्ट विथ आवर करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट वीक आमे गोटे ऑलरेडी मैराथन सेशन करथिलु करंट अफेयर रो व्हिच आई थिंक तुम पे निहाती गोटे यूजफुल वीडियो हबो एंटायर ईयर रो रिवीजन पे हाउएवर जहाँ भी पीडीएफ्स वगैरह अच्छे लास्ट माने पूरा वर्ष रो आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम माने ईच क्लास रो पीडीएफ एटलीस्ट थरे थरे देखि दियो और एल्स वीडियो जदि पारुछो प्लेलिस्ट अछि यूट्यूब रे सेठी जाई कि भी तमे फास्ट फॉरवर्ड करके इंपोर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट तमे देखि परिबो लास्ट ईयर रो कोन कोन सब इंपोर्टेंट न्यूज़ थिला ओके एंड रिसेंटली जो आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम भी थिला सेथरे भी किछटा करंट अफेयर्स आसी जोटा हम ऑलरेडी क्लास रे डिस्कशन करिथिलु जेमति कि हैला तमरो समुद्रयान ओपीएससी रे भी आस्थिला यूपीएससी रे भी आसिला जोटा विषय हम डिस्कशन करिथिलु देन हमर थिला कोन सेटा सुदर्शन चक्र सेटा भी हमें पढ़िथिलु बिकॉज आउट रेयर अर्थ ए सब जिंस प्रधानमंत्री मोदी तांकर इंडिपेंडेंस डे स्पीच रे कहिथिले रेयर अर्थ मिनरल कथा सेमीकंडक्टर कथा यू नो से सब जिंस गुडा को भी तमरो पढ़िथिला ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर ए सब जिंस हमें पढ़िथिलु सो ए सब जिंस प्रेडिक्टेबल जदि तमे करंट अफेयर्स आउ साइंस एंड टेक भलो से प्रिपेयर हे की जाओ देन some questions are predictable okay nobody is claiming कि we have माने आमर जिंस ही पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दी जंती नहीं because से गुडा को न्यूज़ रे थिता तो सेटा क्वेश्चन रे आसची एंड से न्यूज़ गुडा को हमें कवर अप करिछु ओके सो देखो तम इच्छा ता परे बट मु कहबी कि इफ यू रिलीजियसली प्रिपेयर करंट अफेयर्स निहाते किछि ना किछि जिंस तुमको सेठी आसीबो एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ओके 5-6टा क्वेश्चन भी हो तमे पूरा 100% श्योर थेबो सेथरे तुमको सेथरे किछि गेस वर्क करे पड़बो ने एलिमिनेशन करे पड़बो नि ओके चलो सो गुड इवनिंग विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इज डीआरडीओ's new missile offers precision strikes anti-drone combat now this is basically ULPGM V3 ULPGM विषय में ऑलरेडी गोटे थर पढ़ी थिलु ओके मते जति मन पड़ुची ULPGM विषय में पढ़ी थिलु ULPGM रो फुल फॉर्म कोन UAV U रे हला UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल माने ड्रोन हला U रो माने हला UAV ता माने हला ड्रोन UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल माने गोटे प्रिसाइज टारगेट को जदि तुमको हिट करियार अछि देन तमे कोन करि परिबो यूजिंग ए ड्रोन हाउ कैन यू टारगेट ए पर्टिकुलर लोकेशन हैला सो दैट यू कैन डू बाय ULPGM तो आर लास्ट वीक रे किछटा फाइनल ट्रायल्स हेतिला कहा द्वारा डीआरडीओ द्वारा तो इति तमे देखि पारथबो दिस इज द ड्रोन एंड दिस इज द मिसाइल दैट इज बीइंग थ्रोन फ्रॉम द ड्रोन ओके तो एमिति तमे फ्री फॉल करिकी करि परिबो सो आर V3 अछि ULPGM V3 पूर्वरु V1 और V2 भी ऑलरेडी तमरो ही सारिथिला V1 ता खास करके तमरो थिला माने कोन लॉन्गर रेंज मिड रेंज ए सब टारगेट्स पे तमरो V1 V2 ऑलरेडी थिला ओके तो ए जो V3 अछि सो एज आई सेड डीआरडीओ एटा को सक्सेसफुली तार फाइनल ट्रायल्स करिछि कोठू एट द नेशनल ओपन एरिया रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश
ओके एंड से मिसाइल ताको एयर टू ग्राउंड भी टेस्ट करा हेइथला आ एयर टू एयर भी टेस्ट करा हेइथला फ्रॉम एन इंडिजिनस यूएवी ना को यूएवी को ड्रोन यूज करा हेइथला इंडिजिनस ड्रोन ओके अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी रो फुल फॉर्म कोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जोटा को तमे ड्रोन बेली बुझुछ राइट सो इंडिजिनस माने इंडिया रो की जे डेवलप करथे बसे ड्रोन टाको किए डेवलप करिछि दिस इज इंपोर्टेंट न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ओके न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी इट इज अ स्टार्टअप private startup but it has taken the help of DRDO okay so new space research laboratory with the help of the DRDO laboratory and 30 MSME and startups so they have made this UAV unmanned aerial vehicle so ULPGM V3 is a drone launched precision missile that can accurately hit both ground targets as well as aerial target मु तुमको कहली air to air भी तमे करि परिबो air to ground भी करि परिबो ULPGM3 रे this can be one statement एटा गोटे statement हे परिबो कि ULPGM ता air to air ही करबो कि air to ground करिबो कि air to water करिबो ए सब जिंस statement रे देथे राइट तो आमे मन रखिबा एयर टू ग्राउंड भी करिबो एयर टू एयर भी करिबो किए बनेछि से ड्रोन ता न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी बनेछि ओके सो इट्स एयर टू ग्राउंड रोल इज मेनली फॉर डिस्ट्रॉइंग टैंक जदि तमे ग्राउंड को थ्रो करूछो मिसाइल देन से कोटा को डिस्ट्रॉय करिवो टैंक्स को डिस्ट्रॉय करिवो आ जदि तमे एयर टू एयर थ्रो करछ माने ऑब्वियसली तमे किछि एनिमी ड्रोन्स अछि ताको भी अटैक करि परिबो किंबा एरियल हेलिकॉप्टर की एमिति जदि एयर रे किछि तम पाखरे थ्रेट अछि देन ताको तमे अटैक करि परिबो राइट सो इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ V2 ULPGM V2 रो अपग्रेडेड वर्जन एनहांसिंग इंडिया's indigenous drone launched precision strike capability am I clear okay so this was all about your ULPGM so recent trials were carried out in the anti-armor configuration designed to neutralize modern armored vehicles protected by RHA and ERA. Now, एते technical हमको जीवा दरकार नहीं. हमको एथिरे important हैला बस एति की जिनसे तमें मन रखियो and को technology in case पचारे statement जल्दी भी दिए then एटा होची they are protected by rolled homogeneous armor and explosive reactive armor हैला ए दिटा जिंस मन रखियो बस बेसी डीप टू गले एते जिंस हमको दरकार नहीं बिकॉज़ आहुरी भी बहुत जिंस अछि जोटा के हमको मन रखिया को पड़ुची ओके चलो next is UCC will never be applied to tribal people says Amit Shah what is UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड राइट तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राइबल्स मानक पय अप्लाई होबनी ए स्टेटमेंट अमित शाह कहले व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस स्टेटमेंट जदि से कहउछन कि एमति किछि गोटे यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राइबल मानक पय लागू होबनी देन ट्राइबल मानक पय सेमति किछि अलगा कोड किछि अछि कि इफ यस तमे जदि किछि जानि छ मते कमेंट रे कहू okay so addressing the संघ परिवार organized जनजाति सांस्कृतिक समागम जोटा कि न्यू दिल्ली रे हेथिला he referred to as जनजातीय महाकुंभ union home minister Amit Shah on Sunday assured that ST communities that any form of a UCC that is implemented in the country will keep tribal communities out of its provision माने UCC ट्राइबल माननको ऊपरे लागू हबो नाही सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग सो रिसेंटली से जिनसेटा कहिथिले कि जेति के भी तमरा ट्राइबल कम्युनिटी अछंती दे विल रिमेन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल राइट्स विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड ओके एटा से कोठी कहिले न्यू दिल्ली रे कहले गोटे समागम हेथिला म तुमको ऑलरेडी कहली he also highlighted the government's focus on tribal welfare and recalled the legacy of Birsa Munda करो 150th birth anniversary year भी हमें celebrate करू छु so that is why tribal जिंस गुडा को भी ठीक ध्यान देबा को पड़िबो okay
So there are मु तुमको कहली जदि यूसीसी लागू हबनी then सेमते किछि स्पेसिफिक तांको पय अछि कि yes we do have the tribal customary rights. Tribal customary rights. Now what is this tribal customary rights? These are traditional unwritten. देखो UCC is written but this is unwritten legal and social systems that have governed indigenous communities for centuries. वर्ष हला तमरो tribal customary rights समस्त ऊपर लागू होगी आछि. They dictate core civil matters like marriage rituals, divorce procedures, child adoption, unique land inheritance. माने तमे देखिबो कि ट्राइबल मानकर थाए कि तांकर जो ए जागाटा जदि भाई भौणी अछनी तो भाई पाखरे भी जगह मिल पारिबो कि झियो पाखरे भी माने भौणी को भी जगह मिल पारिबो कि बोथ को मिल पारिबो तांकर सेमति स्पेसिफिक किछि राइट्स अछि. दे हैव देयर स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग मैरिज जेमति पॉलीगामी तमरो गोटे एग्जांपल हला उत्तराखंड रे कि हिमाचल प्रदेश रे तमरो पॉलीएंड्री नॉर्मल लोक मान को पाई पॉलीगामी पॉलीएंड्री अलाउड नहीं बट सेही सेम जगह रे जोठी कि यूसीसी लागि छि उत्तराखंड रे यूसीसी लागि छि बट सेही सेम जगह रे गोटे झियो दीटा पुओ को बाहाइतला पॉलीएंड्री मैरिज करथिला. व्हाई? बिकॉज़ they belong to the ST community. Now ST community मान को UCC केबे भी लागिबो नाही. Okay, that is in our provision. कि तांकर जेहेतु किछि गोटे प्रैक्टिसेस अछि रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिसेस अछि तांको आमे हर्ट करिबा जदि एमति किछि UCC लगेबा सेति पे सेमान को राइट्स चली आछि एंड गवर्नमेंट सेतरे इंटरफेयर करेनी. मैरिज रिचुअल हला डाइवोर्स रिलेटेड जिंस हला कि चाइल्ड अडॉप्शन हला किंबा लैंड इनहेरिटेंस पैटर्न ए सब पे गोटे जिंस से माने फॉलो करंती व्हिच इज ट्राइबल कस्टमरी राइट्स. ओके, द कॉन्फ्लिक्ट. नाउ आर्टिकल 44 DPSP directs the state to secure a uniform civil code for all citizens throughout the India, right? This means replacing diverse religious and community personal laws with a single common law. UCC माने तो I hope तम माने जानते हो uniform civil code माने एमिति law जोटा जो law टा समस्तों को समान irrespective of whomever they may be, right? Uniform civil code article 44 रे हमरो जिंस ना मेंशन भी अछि. Problem हला applying a rigid uniform law across India would automatically invalidate the distinct protected traditions of India's indigenous tribes, threatening their cultural survival. जदि तमे गोटे यूनिफॉर्म कोड एंटायर इंडिया रे लगे दोजो देन तमे ट्राइबल मानकर जो कस्टमरी राइट्स अछि तांकु तमे हैम्पर करिबार प्रोविजन माने करि देबो नोइंगली और अननोइंगली. ओके, so that is the problem. So tribal communities मान को पई constitutional protection कौन अछि जदि तांको हमें टिके स्पेशल कैटेगरी नियाते रखो, राइट? सो जदि हमें तांको स्पेशल कैटेगरी रखु छु तांको पई किछरा स्पेशल प्रोविजंस भी थिबो ट्राइबल मान को पई. And why we are going deep into this tribal thing? As I said, 150th birth anniversary of Birsa Munda year ro celebration chali chi. Okay, that's why. So fifth schedule, Article 244, if you remember, it says it governs the scheduled areas across 10 states in central India and peninsular India. It gives the governor, kahaku, governor, extraordinary powers to modify, suspend or block any act of parliament or state legislature that threatens tribal land or social custom. जदि ए दीटा जिनस को हैम्पर होउछि ट्राइबल मानकर देन गवर्नर पाखरे पावर अछि से चाहिले से जिनसटा को मॉडिफाई करि परिबे, सस्पेंड करि परिबे किबा ब्लॉक करि परिबे. ओके, एंड दिस इज written in our article 244 clause 1. Then we have sixth schedule, article 244 clause 2. It grants a high level of administrative and legislative autonomy to tribal areas in northeastern states. Hello, तो एटा तमर कोन
Article 244 clause 1 टा जोटा अछि 5th schedule रे, that is applicable to central and peninsular India. Okay, and this 6th schedule article 244 clause 2, it is for which states? It is for AMTM or ATMM, जेमती भी तमे मन रखी परिबो 6th schedule रे जो states गुडा का हमर जनरली बिलोंग करंती. ओके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ए स्टेट्स मानको पय एटा लागू हबो. It establishes autonomous district councils. ओके, जेते कि भी तमे मन रखिबो 6th schedule रे जदी किछि गोटे स्टेट आसिला, देन सेठी तमरो एडीसी फॉर्मेशन हबो. एडीसी कोन? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, which possess the exclusive legal right to make laws regarding marriage, inheritance and social customs. Okay, तो यूसीसी रे तमरो मैरिज रिलेटेड, डाइवोर्स रिलेटेड सब जिनस किछि ना किछि उडे रूल्स अछि, एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इस यूसीसी समस्त पय लागू होबा दरकार. बट एसटी माने जत्ते कि भी ट्राइबल लोकन को छाडी तांको पय किछि उडे कस्टमरी राइट्स अछि, तांको पय स्पेशल प्रोविजंस अछि. ए दुटा हला से स्पेशल प्रोविजन रो किछि प्रोविजन. ओके, सो जदी तमे माने इफ एनी स्टेट बिलोंगिंग टू सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, देन तांको पय कोन हबो? गवर्नर को पाखरे पावर थाए कि से किछिटा जिंस जदी ट्राइबल को हैरान करछि से जिंस से चेंज करि परिबे. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द 6th schedule एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाखरे पावर अछि, ऑटोनॉमी अछि, सी सब जिंस डिसाइड करि परिबो रिगार्डिंग मैरिज, इनहेरिटेंस एंड सोशल कस्टम्स. एम आई क्लियर? ओके, ए दीटा जिंस हमर इंपोर्टेंट. देन वी हैव आर्टिकल 371A नागालैंड पे एंड आर्टिकल 371G for Mizoram, because this special article states that no act of parliament concerning tribal customary laws or religious social practices or land ownership can apply to these states unless the respective state legislative assemblies pass a formal resolution to accept it. कौन बुझिलो कि ए जो स्पेशल आर्टिकल्स अच्छी से आर्टिकल लिखा है कि पार्लियामेंट रो किछि एक्ट, ओके, जोटा कि ट्राइबल लॉ को सहित तार किछि भी तालुकात थिबो, ट्राइबल लॉ सहित रिलेटेड थिबो किंबा रिलीजियस प्रैक्टिसेस रिलेटेड किछि गोटे एक्ट पास होछि पार्लियामेंट रे, किंबा लैंड ओनरशिप रिलेटेड किछि गोटे एक्ट पास होछि पार्लियामेंट रे, देन सेही जिंस गुडा को सेही स्टेट रे माने मिजोरम किंबा नागालैंड रे तेबे ही लागू ही परिबो जब तांकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे सेरा गोटे फॉर्मल रेजोल्यूशन हे कि एक्सेप्ट करा जिवो, तबे ही से माने एटा को मानिबे, नहले मानिबे नै. बुझि परलो? सो टिके अलगा रहउछि, कॉन्स्टिट्यूशन समस्त को पे समान, बट ट्राइबल मन को पे टिके टिके इथे चेंज होछि. ओके, एंड को आर्टिकल्स रे से चेंजेस तुमको देखिया को मिलुछि, तुम माने एठी देखिलो, बिकॉज़ ए सब जिंस कोन पे होछि, सो दैट तांकर जो राइट्स अच्छी, तांकर जो कस्टम्स अच्छी, तांकर जो रिलीजियस प्रैक्टिस अच्छी से गुडा को प्रोटेक्ट हेके रहू. ओके, सॉरी. Also we have Tribal Advisory Council, TACB हमर अछि. It is a constitutional body mana rakhibo. Okay, it is a fully constitutional body established under the 5th schedule of the Indian Constitution to advise on the welfare and advancement of STs in scheduled areas. ST मान को पय खास करी कि तमरो Tribal Advisory Council form हेथिला, and it is a constitutional body. It comes under 5th schedule. It was established under the 5th schedule. Constitutional provision provided under Article 244(1), which we already seen just now, and the 5th schedule of the Constitution, constituted in states having scheduled areas, consist of a maximum 20 member. About 3/4 of the member must be ST representatives in the state legislative assembly. Okay, so Tribal Advisory Council रे किए रहिबा दरकार, केते जन रहिबे तमरो? मैक्सिमम 20 जन रही परिबे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रे. ओके, एंड जो स्टेट्स रे तमनो शेड्यूल्ड एरियास अछि सेही स्टेट रो लोक ही रही परिबे, एंड अबाउट 3/4 ऑफ द मेंबर केते
3/4 of the member they must be ST representative in the state legislative assembly. This is the condition. Okay, tribal advisory council रे किए रही परिबे तारो कंडीशन एगोटा. तो ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हला तारो फंक्शन कौन मेन हला टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटेड टू एसटी मानकर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट मैटर्स. ओके, एसटी मानकर ट्राइबल मानकर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड एंड रिसोर्सेस, एडवांसमेंट ऑफ ट्राइबल communities in scheduled areas. Okay, so ए जिनसो रिगार्डिंग किसी भी एडवाइस दबार जदि थिबो गवर्नर को से माने देई परिबे. ओके, रोल ऑफ द गवर्नर कैन रेफर एनी मैटर रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर टू द TSE फॉर एडवाइस. Okay, the governor also submits report regarding scheduled areas to the President of India. So there is a link between governor and TSE. TSE रे जो माने भी मेंबर्स थिबे, ओके, तो से माने कोन करिवे किछि भी तांकर इश्यू थिबो देन और गवर्नर को किछि जिंस रे प्रॉब्लम होथबो देन गवर्नर से मानकर एडवाइस मागी परिबो. ओके, TSE मेंबर्स माने को TSE मेंबर्स माने तांकर एडवाइस देई भी परिबे. Okay, to the governor according to the constitution because it is a constitutional body. So it acts as an institutional mechanism to protect the tribal rights, customs and interests. It promotes participatory governance in tribal areas. Yes, Odisha रे same rule follow होची. जेकोनो से भी देखो सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया रे ओके तमरा स्टेट जदी रहूची एंड तमरा स्टेट रे शेड्यूल्ड एरियाज अछि, ट्राइबल्स अछंती, एसटी तापर अछंती एंड एसटी आम पाखरे भी ओडिसा रे भी बहुत अछंती. देन ऑब्वियसली सेम जत्ते भी इंडिया रे एसटी एससी एमाने अछंती से मानकर राइट्स को हमको प्रोटेक्ट करियार अछि. तो सेति पे ई सब जिंस हमें पढुचो. दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर. There are provision कि जदि से माने शेड्यूल रे बिलोंग करंती और से माने बाकी सब स्टेट्स को बिलोंग करंती, that doesn't matter. Okay, ओडिसा रे भी फॉलो हुए. So the Uttarakhand model, when Uttarakhand became the first state in India to pass a UCC, it included a strict statutory clause. जेतबेले भी माने जेतबेले तांकर UCC पास हेतिला उत्तराखंड रे गोटे स्ट्रिक्ट क्लॉज मेंशन करा हेतिला कि एसटी मान को ऊपर एटा लागू होबो नाही, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मान को ऊपर UCC लागू होबो नाही. The union government is using this state level framework as the structural template for the proposed national UCC. एबे तो एंटायर इंडिया रे UCC लागी नाही ना, एबे खाली उत्तराखंड रे लागि माने कहूची उत्तराखंड रे कथा एटा. तो जेते बेले एंटायर इंडिया रे लागिबो देन तुमको ए जिंसटा फॉलो करिया को पड़िबो. ओके, एसटी मान को एक्सेप्ट करिया को पड़िबो. पेसा एक्ट 1996, the provisions of the panchayat extension to the scheduled areas act extends local self governance to the 5th schedule areas. 5th schedule रे जो एरियाज गुडा अछंती सेथरे किछरे तमरा सेल्फ गवर्नेंस एरिया और पंचायत एरियाज गुडा को भी इंक्लूड करा जायछि. इट क्राउन्स द ग्राम सभा एज द एब्सोल्यूट लीगल कस्टोडियन ऑफ माने जदी तमरा किछि गोटे मन करो गां रे एमति किछि गोटे प्रॉब्लम हला ट्राइबल राइट्स ट्राइबल लैंड रिलेटेड किछि गोटे प्रॉब्लम हला देन सेठी तमरा कोन हबो सेठी तमरा विलेज काउंसिल गुडा थाए ग्राम सभा थाए राइट. तो सेमान को पाखरे लीगल कस्टोडियन अछि, सेमाने से जिंस गुडा को रिजॉल्व करि परिबे. द गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड अ डेडिकेटेड पेसा सेल. ना ए राइट तांको मिलिला कोठो थ्रू द पेसा एक्ट. ओके, एंड गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ डेडिकेटेड पेसा सेल टू ट्रांसलेट these rules into local languages like Santhali, Gondi, Bhili and Mundari to prevent tribal land alienation. Okay, तो गोटे पेसा सेल अछि तमरो ए पंचायत गुडा करे ग्राम माने छोट छोट गां गुडा करे तमरो गोटे पेसा सेल भी थिबा कथा अछि कि नै मु कहि परिबिनी जो थ्री कि तमरो ए जहा भी रूल्स अछि
ए सब रूल्स तांको निज लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज रे लिखा हबो एंड दैट इंक्लूड सांथली गोंदी भिली मुंडरे ए सब लैंग्वेजेस भी सेथरे इंक्लूड हे कि अछि ओके ओके सो या जेतेबेला हमें भगवान बिरसा मुंडा कथा भी पढ़िथिलु द ग्रेट ट्यूमल्ट और मुंडा रेबेलियन और ओलगुलान से जिनसटा को कहा जाए सेटा तमरा हेतला ए जिनस गोटा हम ऑलरेडी पढ़िथिलु बिरसा मुंडा को ऊपर सो आई विल नॉट जस्ट स्किप दिस ओके कोन ट्राइबल मान को पई एतिके थाई कि भी तंक कोन चैलेंजेस माने फेस करे को पडुची फ्रैगमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी by completely exempting a large section of the population or UCC रा कोन challenges रोची हमें देखिबा the code ceases to be strictly uniform okay the judiciary will have to evaluate if a hybrid law complies with the true legislative intent of article 44 gender justice dilemma a primary goal of UCC is ensuring equal rights and gender justice for women regarding marriage, divorce and property inheritance. Okay. Main UCC आना हितला एथि पय कि जो मेल फीमेल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहउची सेटा केमते बैलेंस हे परिबो. Leaving tribal customary laws entirely untouched means that certain traditional male dominated customary practices will remain outside statutory reform. Okay. जेमति तमे polygamy allow करूचो ST मनगु तो सेठी तो फिर वुमेन मन माने फॉर एग्जांपल गोटे वुमेन माने दीटा वुमेन अछंती दी जण गोटे लोक को भाई छंती तो देन से दीटा वुमेन मे बी सेठी से माने कहि पार नथिबे तांको ट्राइबल कस्टमरी राइट्स हिसाब रे सेटा ठीक अछि बट सेटा तांको मन को प्रति इंडिविजुअली डिस्क्रिमिनेशन होची सो हाउ कैन यू से देन दैट दिस इज ऑल यूनिफॉर्म तमे गोटे सेक्शन ऑफ पीपल को अलगा कर दोछ तो किछि गोटे एमते हाइब्रिड लॉ आने को पड़िबो जो थरे तमे एसटी मान को भी इंक्लूड करके सेमते किछि गोटे लॉ बनै परिबो ओके बट टोटली सेम तांको लॉस गुडा को टच ही करा होनी दैट इज द इशू लैक ऑफ कोडिफिकेशन because most tribal customary laws are unwritten barambar mu tumko kohuchi ki tribal customary laws is not a written legal document it is unwritten and passed down orally lower courts often struggle to accurately interpret them during civil dispute जदि lower court रे तमरा एमति किछु हियरिंग हैला तांको पाखरे written रे किछि भी डॉक्यूमेंट नाही कि if this is right or if this is wrong तमे orally जिनसटा स्प्रेड हेकी आछि कि ये एटा कहिला से सेटा कहिला से सेटा कहिला कि हम बापा एटा करथिले हम जेजे बापा एटा करथिले तो हमें भी करिवु because this is our right so सेमति किछि legal document नाही so these are the issues or the challenges that we need to overcome okay good evening Satya why government focus tribal people because tankaro mane they are not as well to do as general people mane mu to semte kahi paribini they are not samaste semte nuhanti but किछि ना किछि गोटे बैकवर्डनेस रहउची सेति पे तमे रिजर्वेशन आनिछु ना बीआर अंबेडकर आनथिले देन दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग बिकॉज़ किछि ना किछि गोटे एबे ऑब्वियसली कास्ट सेंसस पर हमको जाना पड़िबो कि एक्चुअली किए भोगुची एसटी माने टिल नाउ एसटी माने एससी एसटी माने भोगुचंदी कि नाउ जनरल पीपल आर द सफरर्स सेरा तो कास्ट सेंसस पर जाना पड़िबो जदी ठीक ठाक हुए बट अदरवाइज चली आछि कि ट्राइबल मानकर मे बी you know population aguru कम थिला they were not well to do as compared to general people तो तांको फोकस करा जाउथला प्लस सेमान करो कल्चरल राइट्स को हमको प्रोटेक्ट करियार अछि बुझबेलो सेमान करो कल्चर राइट सेमान करो टिके अलगा रूल्स रेगुलेशन सब अछि तांको सहित तमे एकते लागि पारिबोनी कि चिरा जिंस को नै कि से माने मानी बेनी बहुत सारा जिंस को नै कि तो एंते बहुत सारे इश्यूज देखा जाय छी ओके तो सेति पे गवर्नमेंट सेमान करो भलो पाई ही करूची बट तांको ए यूसीसी रे इंक्लूड न करी कि आमे यूनिफॉर्म वर्ड जो करूचो सेटा वैलिड होनी ओके यूनिफॉर्म वर्ड ता हमरा वैलिड हे पारो नाही ओके चलो
So codification of customary practices, government should collaborate with ADC. ADC मानक सहित जो autonomous district council गुड़ाक अच्छी तमर scheduled areas रे हैला सेमान को सहित कोलाबोरेट करिकी आउ जत्ते की भी तमर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छी सेमान को सहित कोलाबोरेट करिकी गोटे सिस्टमैटिकल डॉक्यूमेंट आनंतु ओके बिकॉज ट्राइबल कस्टमरी राइट्स गोटे अनरिटन डॉक्यूमेंट तो एमती किछि गोटे कोड आसु तांक रिलेटेड गोटे रिटन डॉक्यूमेंट आसु सो दैट सेठी तांकर लॉज जहाँ भी अच्छी से जिनस गुड़ाक लिखिले समस्त को क्लैरिटी मिलिबो प्लस strengthening the decentralized governance, ensure that the expanded budget is transparently routed directly through local gram sabha under the PISA Act, reinforcing genuine tribal self-governance. Okay, and consensus-based approach. Before introducing a national UCC bill, the union government must release transparent drafts माने directly तमरा गोटे नेशनल यूसीसी बिल रिलीज करया पूर्व गोटे ड्राफ्ट बनैबा कथा एंड इंटरस्टेट काउंसिल भलिया प्लेटफॉर्म को हमको यूज करबा कथा टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एलिमिनेट फियर अमंग द इंडिजिनस कम्युनिटी ओके A balanced approach to the UCC must uphold both constitutional equality and cultural autonomy of tribal community. दीटा को बैलेंस करके चलिया को पड़ेगा. Protecting tribal customary rights while ensuring gradual consultative reforms is essential for inclusive and cooperative nation building. तो जते बला में inclusion कथा कहूचो, equality कथा कहूचो, then हमको एमती किसी स्पेशल रखिया कथा फॉर माने डायरेक्टली जदि मु कहबी बिकॉज़ समस्त समान ना समस्त समान एससी हो एसटी हो जनरल हो हमें सेंते टिल नाउ माने आज का टिल डेट ओके आजर डेट रे मु कहूची आजर डेट रे हमें समस्त को समान नहीं चलिया कथा बिकॉज़ दैट इज व्हाट इंक्लूजन मींस जदि गोटे रूल आसु समस्त को मैसेज रूलटा लागू हो व्हाई ओनली टू एससी एसटी जदि रिजर्वेशन होची व्हाई ओनली टू एससी एसटी खास करी तो तमरो जॉब सेक्टर रे रिजर्वेशन हबा कथा न हां पढ़ा पे ही परिबो बट जो माने एक्चुअली बैकवर्ड को बिलोंग करछन्ती सेटा माने सेमान को रिजर्वेशन दे लागले ठीक बुझ परछ अदरवाइज तमरो बापा मा ऑलरेडी तमरो आईएएस ओएस थिबे एंड तम माने स्टिल नाउ तम माने रिजर्वेशन नो थबो एंड जबकि जहां बापा मा गोटे डेली लेबरर अछन्ती से किछ गोटे बेनिफिट पाई पारुनी देन where is that equality, where is that inclusiveness? Okay, so किछटा तो लाकुना रहूची गवर्नमेंट रो लेट्स सी हमें मरिया भीतर ई सब जिंस ठीक हे परछि कि नहीं चलो आगु को जिबा so Jaishankar to host quad ministers meet on May 26 today is May 26 by the way तो आज एटा हेई थिबो quad meeting okay and एथरे कोन बेसिकली हमर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर he hosted the landmark quad foreign ministers meeting कोठी at Hyderabad house in New Delhi okay quad कोन तमने I hope जानि थेबो जो माने भी जानि न quad होची the quadrilateral security dialogue it is the premier non military plurilateral strategic coalition of four major democracies committed to upholding an open rule based and resilient international order quad माने 4 तो quad रे चारटा साइड थाए राइट तो ये quad रो मेंबर्स माने किए ए माने होचंदी quad रो मेंबर्स इंडिया भी गोटे मेंबर quad रो इंडिया जापान देन यू हैव यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ए चारिटा मेंबर्स हमरा अछंती quad रो ओके सो बेसी डीप को जिबा नहीं क्वाड रो ए जो मीटिंग ता हितला कोठी हितला मन रखिबो क्वाड रे के मेंबर्स अछंती मन रखिबो ओके अच्छा एटा गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरप्रेटिंग द राइज ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी देखछो कि नहीं न्यूज़ कॉकरोच जनता पार्टी गोटे फॉर्म हेलानी मिलियन फॉलोअर्स हेलेनी इंस्टाग्राम रे बहुत सारा मिलियन फॉलोअर्स हेलेनी कौन है कॉकरोच जनता पार्टी देखिथिबो न्यूज़ अच्छा जदि देखिछ टेल मी वन थिंग तो एमाने जो कहउछन्दी कॉकरोच जनता पार्टी
माने कहीदेले से माने गोटे पार्टी फॉर्म कर देबे कि सिंपली इफ दे से कि वी आर फॉर्मिंग ए पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी देन कोन तांगे पार्टी तांगर फॉर्मेशन कर दे परबे एमती कहलो मते एमती किए भी चाहिए कि गोटे पार्टी एमती बनै दे पारिबो कि कौन कुआ अरे एमती रैंडम किए भी आसिके गोटे जो कहला भारतीय जनता पार्टी को से चैलेंज करके कहूची वो कॉकरोच जनता पार्टी 4 या 5 मिलियन तांकर फॉलोअर्स हेलेनी तो कैन दे फॉर्म ए पार्टी एमती ही कही कि माने गोटे इंस्टाग्राम रे गोटे ग्रुप बने कि ट्विटर रे गोटे ग्रुप बने कि एमती गोटे पार्टी फॉर्मेशन करी दे पारिबे कि सेमते किछि प्रोविजन अछि हाँ ना नहीं आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स मो वॉइस सुबुची तो छाड़ तुम मैंने कहब मुझे पढ़ेबी प्रथम कथा मो क्वेश्चन आंसर मु निजे ही दे दूँ कैन दे फॉर्म ए गवर्नमेंट यस बिकॉज आर्टिकल 19 कहूची कि समस्त पाखे फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी से सब फ्रीडम अच्छी जड़े किसी भी करि परिबो बट गोटे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करिया को हेले तुमको इलेक्शन कमिश्नर ईसी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पाखे तुमको रेजिस्टर करिया को पड़िबो रेजिस्ट्रेशन करिवा को हेले तुम पार्टी रे 100 मेंबर्स निहाती रहिथिबा दरकार एंड तमे इंडियन सिटीजन हेथिबा दरकार समस्ते जति जण भी तमे अछ 100 मेंबर्स दे मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स एंड तम पाखे गोटे रिटन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थिबा कथा और रिटन सेट ऑफ रूल्स थिबा कथा कि एटा होची हमर पार्टी रो रूल्स एंड एवरीबॉडी वी आर रेडी टू अबाइड बाय दिस रूल्स ओके एतिकी सब जिंस हले तमे पार्टी फॉर्मेशन करि परिबो ओके किछ असुविधा नै बट अगेन यू हैव टू रजिस्टर विद इन 1 मंथ एंड आरो बहुत सारा छोट छोट जिंस अछि ओके सो द रैपिड राइज ऑफ द सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी across social media platforms has triggered discussion about the changing nature of political mobilization in India. The phenomenon has raised broader questions regarding digital politics, youth participation, online outreach, collective identity, and the future of democratic engagement. Okay, so what was the story? Cockroach nata padila kon pai. The movement was sparkled by a controversial remark made during a Supreme Court hearing on May 15, जो थे कि हमारे Chief Justice of India, Justice Suryakant, he allegedly compared certain unemployed youth who turned to social media activism or citizen journalism to cockroaches and parasites of society. ओके तो तांकर कहिबार किछि अलगा वे थिला बट आम यूथ ताको टिके अलगा वे रे नै गला कि जति कि भी तमे एमदे बस पढि के रहिछो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समस्त हे होछन आजकली दे ऑल आर कॉकरोचेस सेटा कहितले एंड जेतु सेटा कहितले सोशल मीडिया रे अच्छा समस्त अनएम्प्लॉयड यूथ यू ऑल आर कॉकरोचेस से माने जस्ट जणे एटा स्टार्ट करला कि चलो गोटे ठीक अछि हमको कॉकरोच कहले तो आमे गोटे कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट करिवु ये करिवु से करिवु चलो देखिया कोन होछि सो ऑल्दो द चीफ जस्टिस लेटर इश्यूड अ क्लैरिफिकेशन stating his remarks were misquoted and targeted individuals using fake and bogus degrees
rather than the nation youth. माने entirely पूरा nation रो youth को कही नथिले, but जो माने fake degrees, bogus degrees नेकी बसी की unemployed है की अच्छंती, then social media को पढ़े अच्छंती, तो तांको target करके कही थिले, whatever may be, okay. So ता response रे अभिजीत डिपके, who is a 30-year-old political communication strategist and a former social media volunteer for the Aam Aadmi Party, he launched a Google form on X, inviting all cockroaches to unite under a parody banner. Okay. So, ये जो cockroach जनता पार्टी तारो vision mission कौन है? तारो vision होची कि we are not here to set up another PM cares, holiday in Davos on the tax pay, माने हमारा tax नहीं की आमे जाए कि हॉलिडे मनाइबुनी कोठी किंबा आमे एमती पीएम केयर्स किछि फंड भी स्टार्ट करिबुनी और आमे करप्शन को गोटे नुआ ना दबुने हैं कि स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग. वी आर हियर टू आस्क लाउडली रिपीटेडली इन राइटिंग वेयर द मनी वेंट, पैसा गला कुआडे. दैट इज द मिशन or that is the vision. And what is the mission? Build a party for the young people who keep getting called lazy, chronically online, and most recently cockroaches. That's it. That's the mission. The rest is satire. So they have 5 demands basically. Okay. ये जो cockroach जनता पार्टी फॉर्मेशन होची तारो मैनिफेस्टो और तारो डिमांड्स कौन कौन रोची. जद्दी cockroach जनता पार्टी पावर रे आसी जाए, no chief justice shall be granted a Rajya Sabha seat in as a post retirement reward. If any legit vote is deleted, जदि किछि vote delete हैला CJP रे हो किंबा opposition ruled state रे हो, then the chief election commissioner shall be arrested. Okay. Women shall receive 50% reservation, not 33%. जोटा हमने भी फेल हो गया 33%. से मैंने कहते कि women को 50% हमें reservation दबो without increasing the strength of the parliament. Okay. Additionally, 50% of all cabinet positions shall be reserved for women. All media houses owned by Ambani and Adani shall have their license cancelled to make way for truly independent media. Bank accounts of Godi media anchors shall be investigated. Any MLA or MP who defects from one party to another shall be barred from contesting elections and from holding any public office for a period of 20 years. If someone is changing his party, then se 20 वर्ष पर्यंत ban हे जिवो. ए सब एमती किछिटा मैनिफेस्टो रे तंगर अछि. Okay, so as I said, is this possible? Amara कथा हला से form हो no हो, that doesn't matter, but our topic of discussion should be Article 19(1) Clause A. It guarantees freedom of speech and expression, right, as we all know, which includes digital expression. तमे digitally किछि भी चाहेला express करि परिबो. ए freedom ता तम पाखरे अछि निहाती as per Article 19. However, the Constitution also emphasizes responsible citizenship and the need for order liberty, as interpreted in various Supreme Court judgments like Shreya Singhal versus Union of India, etc., etc. So the phenomenon highlights the declining trust in formal institution. Now this is a concerned matter because तमे गुटे formal institution उपरे trust करिया को राजी होनांते हमरा youth, and the rising importance of network governance. It raises question about the adequacy of the Representation of the People Act 1951 in addressing fluid digital political formations. Okay. So it is a matter of concern. गोटे वर्ड मन रखिबो. ओके, synchronization और solidarity. ई दुटा भीतर डिफरेंस कोन? Synchronization is like thousands of people clapping at the same time in a concert. गोटे concert रे thousands of people अछन समस्ते same time रे clap करछन. That is synchronization, right? Powerful but momentary. Solidarity hela, it is a well organized orchestra that plays together for years, requiring practice, discipline, and shared goals. Okay, so how do you relate these two words, synchronization और solidarity को तमे ए political party सहित केमिति relate करि पारुछ? किछि काम करछि दिमाग रे?
ओके सो ये जो सीजेपी टा हैला सेटा सिंक्रोनाइजेशन अंडर रे जीवो ना सॉलिडारिटी अंडर रे जीवो सेटा तुमको देखिया को पड़िबो ओके एंड दैट इज द क्वेश्चन Consider the following statement regarding trends in contemporary politics. Digital synchronization refers to long-term ideological commitment built through sustained organization. The Cockroach Janata Party is an example of traditional cadre-based political party. This is a statement namar bhul. Okay? Digital synchronization mane hela, it does not refer to long-term ideological commitment. तमे short term पे जोड़ी की रहुचा, है ना? सॉलिडारिटी माने हला तमे ओडे लॉन्ग टर्म पे जोड़ी के रहबा बट जदि हमें सिंक्रोनाइजेशन कथा कहबा किबा डिजिटल सिंक्रोनाइजेशन कथा कहबा दिस आर ऑल शॉर्ट टर्म ओके एंड सेमति किछि सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन नाही सेमान कर शॉर्ट टर्म आ जो सीजेपी रा फॉर्म है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी नो नो राइट तो ये का स्टेटमेंट हमरा बोल सो नेदर 1 and 2 सो एनीथिंग कैन बी अ क्वेश्चन तो सेति पे टिक हमको अवेयर हबाक पड़िबो ओके एंड दिस इज द आर्टिकल दैट हैज कम रिगार्डिंग द सीजेपी तो जेतबेले पीडीएफ टा पाइबो ये आर्टिकल टा भी तमे पढि देबो सो दैट हमरा टिके थिंकिंग दा चेंज हबो नाउ लद्दाख तो ऑलरेडी न्यूज रे रही आछि वर्षे हलानी और वर्षे की ता ऊपर हलानी सेमान कर मेजर डिमांड्स कोन थिला कि सेमान को हमें कोठी इंक्लूड करिबा 6th शेड्यूल रे इंक्लूड करिबार तांकर मेजर डिमांड थिला सेति पे तमरा सोना मांगचू जेल जाइथिले सब जिंस से न्यूज रे थिला ऑलरेडी लद्दाख एंड रिसेंटली तमरा 5टा डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन भी हेछि लद्दाख रे 5टा नुवा डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हेछि लद्दाख रे जदि 5टा जाकर ना कहि परिबो देन बहुत बढ़िया बस ओके कहि परिबो ना 5टा डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हेछि लद्दाख रो त ना के कहि परिबो पढ़ी थिलो हमें ठीक अच्छे देखे देवा So the debate over Ladakh's democratic aspirations has resurfaced following the union government's emphasis on administrative decentralization through creation of additional districts rather than granting a legislature or stronger constitutional safeguard under the 6th schedule. तो नुआ district बने देला हबो नहीं तमको जहाँ तमे डिमांड और जहाँ तमे प्रॉमिस करथिलो कि गोटे लेजिस्लेचर हमको दियो किंबा गोटे स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमको दियो rather than giving us 5 new districts okay so you include us in the 6th schedule हमको बस सेति की दरकार तमे आओ नुआ डिस्ट्रिक्ट बनाओ नहीं so this is what everyone is saying so the issue has gained significance amid continuing demands by the Ladakhi groups for constitutional protection over land, jobs, culture and local governments. So जदि एबे देखिबा लद्दाख रो current status कोन currently it is an union territory. Okay, currently it is a union territory which is governed directly by the central government under Article 239. So unlike UTs like Jammu and Kashmir, Delhi, Ladakh पाखरे तारो निजरो legislative assembly नहीं. Ladakh does not have its own legislative assembly. It is entirely ruled or governed by the central government. Okay, under Article 239. Eta ame mane rakhiba. So Ladakh became a separate union territory in August 2019. तमने जानथिबो Article 370 रो abrogation परे जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसथिला से टाइम रे एंड तमर जम्मू एंड कश्मीर अलगा हे गेला लद्दाख अलगा हे गेला अनलाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी लद्दाख वाज क्रिएटेड एज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली सिंस देन वेरियस पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन लद्दाख दे हैव डिमांडेड स्टेटहुड दियो किंबा हमको गोटे लेजिस्लेचर दियो
हमको नहले तमे 6th शेड्यूल रे इंक्लूड करो, or you give some constitutional safeguard for land and employment, or you give greater local autonomy. Why they are demanding it? There must be some reasons. Ladakh ro a demand pachre nihati kichi reasons achi, right? So recently the union government announced creation of additional district such as Nubra, Chungthang, Sham, Jaskar and Dras. जो 5टा district formation कथा कहूथली. These are the names of this 5 district. Okay, and union government कहूची केमती कले तमरो governance improve हबो. But now the debate is beyond administrative efficiency. The debate now extends beyond administrative efficiency and enters larger questions of democracy, federalism and representation. खाली नुआ डिस्ट्रिक्ट बनैले हबो नाही, हमको जहा डिमांड हमें करि आस्थलु सेटा हमको दियो. ओके, सो प्रथम तो तुमको कहली दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड. ओके, फुल स्टेटहुड हमको दिया जाओ along with an elected legislative assembly so that the local representative can participate in law making and governance. तो जेहेतु एटा वर्तमान कोन यूनियन टेरिटरी and entirely governed by the central assembly, right, or central government. तो तांकर लोक मानकर पार्टिसिपेशन कोठी रहेला, कोठी भी रहू नहीं. They argue that democratic accountability can only be ensured when elected leaders rather than appointed bureaucrats, okay, make decisions affecting the local community. Local community मानकर problem local leaders ही बुझी परिबे. Okay, किसी government authority, appointed government authority, they will not understand the problem. तांको 6th schedule रखा जाओ जेमिति तमरो ATMM अछि. Okay, 6th schedule रे ATMM माने Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram. Okay, under Article 244 the 6th schedule applies to tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. हमको 6th schedule नहले include करो. Okay, the people of Ladakh seek inclusion under the 6th schedule to safeguard their tribal identity, culture, land rights and traditional governance system. Already जो टाइम में ट्राइबल रिलेटेड पढ़िलु कि 6th शेड्यूल जो माने अछंती सेमान को टाइम पे स्पेशल प्रोविजंस अछि. ओके, तो either you give full statehood or you keep us under the scheduled areas माने ए जो 6th शेड्यूल कोटा भी तमे गोटे रखो. ओके, जदि 6th शेड्यूल रे रहुचो कोन सुविधा होची? प्रथम हैला तमरो गोटे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्मेशन हबो. जो माने भी 6th शेड्यूल रे अछंती एटीएमएम से मानकर गोटे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्मेशन हुए जोटा मैं तुमको ऑलरेडी कहली. एंड सेठी तमरो जहा भी डिसीजंस नबा कथा तमे सेठी भी नै परिबो. जदि बा तम पाखरे जदि किछि भी स्टेट असेंबली नाही तमरो एडीसी अछि ता पाखरे भी सिमिलर पावर अछि. सो इट प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव and executive power over specified subjects. It protects traditional customs and practices. It allows the local management of land and natural resources. It grants power related to taxation and local administration. जदि 6 माने काहे कि तंगे माने डिमांड करछन 6th शेड्यूल रे रखिए को 6th शेड्यूल रे रहले तंको एते की बेनिफिट्स मिलेबो. द गवर्नमेंट कोन करला? गवर्नमेंट तो वर्तमान नुवा 5टा डिस्ट्रिक्ट बनै देला. ओके, एंड ए जिनसटा को ए डिबेट को आहुरी बढ़े देला. खाली डिस्ट्रिक्ट बनैले कोन हबो बोली के, राइट? सो मेनी रेसिडेंट्स रेस्पोंडेड बाय आर्ग्यूइंग दैट मोर डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट मीन मोर डेमोक्रेसी as merely increasing the administrative units does not guarantee political empowerment. तांकर रिप्रेजेंटेटिव ही कोठी रहू नांती तो तमे 5टा डिस्ट्रिक्ट बनैले कोन हबो बुझ पछ? जहां भी डिसीजन यदि तुमको ही नबार अछि, सेंट्रल गवर्नमेंट को नबार अछि, then what is the use of this districts? किछि भी यूज नहीं. So the district officials remain primarily accountable to the higher bureaucracy and the union government rather than directly to the local population. According to the local groups, genuine empowerment requires elected representatives and legislative authority, not just additional administrative officer. Okay, what are the arguments against statehood? कौन पे statehood मिलेगा कथा नुह. Okay, sparse population. Opponents argue that Ladakh has a vast geographical area with extremely low population. Area bada but population कम, making statehood administratively difficult and economically unviable.
Okay, लोको कम जगह बेसी. Strategic sensitivity. Since Ladakh shares border with China and Pakistan, the region is considered strategically sensitive from a national security perspective. Okay, जेहेतु गोटे strategic जगह located अच्छी लद्दाख, तो तार दायित्व यूनियन पाखरे रहिले ही ठीक बोली लोक माने क्रिटिसिज्म माने अगेंस्ट वाला माने सब कहउछन्ती. It is argued that central control is necessary to ensure effective border management and security coordination. Security perspective रे कहा जाउची. Third है financial dependency. Another argument is that Ladakh remains heavily dependent on central government funding and poses limited independent revenue generation capacity. Ladakh पाखरे निजर किछि revenue generation capacity नहीं. Okay, critics of statehood claim that the region may struggle to sustain its administrative financially without substantial central assistance. Central जदि assist करिवो नहीं, then से माने financially बहुत तांको struggle करिया को पड़िवो. And जदि से माने financially struggle कले and से weakness टाको देखि कि जदि पाकिस्तान की चाइना try कला, then असुविधा हे जीवो. That is also agreed. Okay, so दीप माने center भी ठीक अछि गोटे आडू, and तमरो Ladakhi people are also correct. So what are the counter agreements? Arunachal Pradesh ro example जदि हमें देखिबा, Arunachal Pradesh रे भी तो density माने population कम, right? It is also a sparsely populated and strategically sensitive border state. सेरा भी China border को belong करछि, right? Yet it was granted full statehood in 1987. 1987 में ताको full statehood दिया जाइथिला, right? एबे देखो हमरो जेहेतु ओडिसा गोटे स्टेट एंड ओडिसा जेहेतु स्टेट आमर पब्लिक सर्विस कमिशन आम बन पार्छु से तुम जॉब तुम बाहर कर पार्छ, बट जेहेतु लद्दाख गोटे स्टेट नहीं तो सेठिकार जो यूथ माने अच्छे से माने भी अनएम्प्लॉयड रोचंती बिकॉज तांकर स्टेट रो सेमती किछि एग्जाम ही नहीं ना, बुझि पालो. दिस एग्जाम अच्छा अरुणाचल प्रदेश एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट्स दैट strategic importance alone cannot be used as a justification to deny the democratic representation in Ladakh. Okay, small population is not a barrier. Nagaland रे, मिजोरम रे, सिक्किम रे सेमानो को भी statehood दिया जाइछि despite having relatively small population. Okay, so therefore low population density cannot be treated as a valid reason for withholding the democratic rights. Financial dependency argument is also weak. Several Indian states, including Bihar and UP, they also rely heavily on the center, right, for financial support. Hence, economic dependence alone cannot determine whether a region deserves democratic representation and constitutional protection. So, eta counter agreements भी सब valid अच्छी, right? So, जो ADC कथा मु तुमको कहली autonomous district council, सेटा हे परिबो जदि तांको 6 शेड्यूल मिल जाउची. तो सेथरे कोन होबो बेसिकली देखो, state laws are not applicable in tribal areas unless extended by the ADC. ADC पाखरे की पावर अछि. ADC हां कहले गोटे लॉ तमरो लागू होई परिबो से एरिया रे, अदरवाइज लागू होई परिबो नहीं. ADC चाहिले भी लॉ बने परिबो कल्टिवेशन ऊपर, डिवोर्स ऊपर, इनहेरिटेंस ऊपर, कस्टम ऊपर, तमरो मैरिज ऊपर, गवर्नमेंट अप्रूवल ए सब रिलेटेड जिंस ADC तमरो नुवा लॉ बने परिबो. ADC are responsible for establishing and managing primary school, dispensary, road, waterways, ये सब भी ADC कर परिबो. ADC can access land revenue, taxes on profession and trade, grant licenses or lease for mineral extraction. ये सब भी ADC कर परिबो. It can establish village council court, district council court, and जो थे कि तमरो जहाँ भी dispute अच्छी regarding your ST से particular district that can be solved. So these are the powers of the ADC. And ADC केते बड़े form ही परिबो जदि तांको 6th schedule रे हमें include करूचे तो. Okay, so with reference to the 6th schedule of the constitution, consider the following statement. It provides for autonomous district council in certain tribal areas. It currently applies to all northeastern states. Autonomous district council possess limited legislative power. Out of these 3 statements, how many statements are correct, or which statements are correct? कहलो ADC विषय में ट्राइबल वाला न्यूज रे भी पढ़िलु.
कौन हम आंसर कौन हम कह मत जल्दी 1 and 3. So it provides autonomous district council in certain tribal areas. That is correct. Okay. It currently applies to all northeastern states. That is not correct. 6th schedule रे जो northeastern states अछंती सेठी ही apply कई परिबो. तामने आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 80 mm. एमदी मन रखिबो तमे 80 mm. 6th schedule रे 80 mm अछि. एमदी मन रखिबो, right? So all northeastern state लिखिला, that is wrong. Autonomous district council possess limited legislative power. This is right. सब power तांगा पाखरे नहीं, किछिटा power माने limited अछि. Okay, सब जिनस रे से माने एते भी पावरफुल नहत. Okay, किछिटा टॉपिक्स रे करि परिबे, एटा के हम ऑलरेडी देखिलु कोन कोन तांगा पाखरे पावर्स अछि. So answer will be 1 and 3. Correct. Yeah, next question. Or which of the following best describes asymmetric federalism? Asymmetric federalism माने कौन बुझिछो? Equal powers distributed to all states, a system where states possess identical constitutional status, a system providing differentiated constitutional arrangement to certain regions, complete decentralization of power to local bodies. तो एबे जे हमें पढ़िलु एबीसी कथा, राइट? तो सेटा को अंडर जीवो, दैट विल कम अंडर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म. ता माने गोटे सिस्टम प्रोवाइड करबा टू डिफरेंशिएट ए सिस्टम प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट टू सर्टेन रीजन. किछटा रीजन पाई हमें अलगा किछि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करिया को पड़िबो. ता माने हला तमरा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म. ओके, नेक्स्ट. Asian Productivity Organization. So the government of India is hosting the 68th session of the APO, Asian Productivity Organization, Koti, at Bharat Mandapam in New Delhi. Okay, so what is this APO? It is a non-political, non-profit and non-discriminatory intergovernmental organization. It currently comprises 21 members. Mane rakhibo 21 members achanti APO re from the Asia Pacific region, working together to drive the sustainable economic growth. Okay, kebe establish heithila May 11 1961 re establish heithila. Headquarter is in Tokyo, Japan. And what is the aim? To contribute to the sustainable socio-economic development of the Asia and the Pacific by enhancing the productivity through mutual cooperation, knowledge sharing and innovation led growth. Okay, so कौन मन रखिबा 21 मेंबर अछंती केबे एस्टैब्लिश हेतिला एंड तारो हेडक्वार्टर कोठी एंड कोठी रिसेंटली तारो होस्ट करा जायतिला. ओके, चलो नेक्स्ट जीवा. प्रगति 2026. So it is a 13 nation मिलिटरी एक्सरसाइज. मैंने 13टा नेशन पार्टिसिपेट करंती ये एक्सरसाइज रे. किए किए एटी देखा जाउची होपफुली भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलिपींस, सेचेल्स, श्रीलंका, वियतनाम. मैंने तमरो अल्फाबेटिकली दिस आर ऑर्गेनाइज्ड. बोले तो 13टा नेशन एथरे पार्टिसिपेट करंती. So the multilateral military exercise Pragati officially commenced at the Umroi military station, which is in Meghalaya, bringing together troops from India and 12 friendly regional nations. Pragati ra full form hela Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean region. It is a premier multinational military exercise. It is conducted under the core principle of mutual respect, equality and shared regional security. Host nation की ए वर्ष रो Indian Army. Okay, कोठी होची
उमरोई मिलिटरी स्टेशन मेघालय रहउची 12टा नेशन along with India 13 हे गला राइट इंडिया ता सहित 12टा फ्रेंडली नेशंस और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज दे आर पार्टिसिपेटिंग भूटान कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka and Vietnam. 13 nations participate करंती एटा मन रखिबा. ओके अच्छा आज अब बेसी डीप को जाऊनी जल्दी सारी हरछि मते टिके. ओके सो नाइब is basically गोटे पुणे बेस्ड प्राइवेट कंपनी. ओके एंड रिसेंटली ता न्यूज रे थिला दीटा कारण पय प्रथम कहला द पुणे बेस्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरर नाइब लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड फायरिंग ट्रायल्स ऑफ सूर्यास्त्र रॉकेट्स ओके विथ स्ट्राइक रेंजेस ऑफ 150 and 300 किलोमीटर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कोठी चांदीपुर ओके ऑन May 18 and 19. So these trials mark the first time an Indian private defense company has demonstrated indigenous long-range rocket systems of such capability, representing a significant milestone in India's defense preparation. Okay, so prathama hela Suryastra rocket system ko se test kala. India recently achieved a major milestone jothre ki gote private company called NIBE mana rakhiba NIBE Limited. ओके सी तमरा सूर्यास्त्र टाको टेस्ट करिछि चांदीपुर रे. सूर्यास्त्र कोन इट इज इंडिया's फर्स्ट इंडिजिनस एंड यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम. ओके इट इज डेवलप्ड बाय नाइब लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विथ इजराइल्स अल्बिट सिस्टम्स. सो नाइब ता सहित कोलैबोरेट करिकि बनैछि. इट इज डिजाइन्ड टू डिलीवर प्रिसिजन स्ट्राइक्स against enemy positions, command centers, radar installations and logistic hubs deep inside the hostile territory. So Suryastra rocket system kono it is an advanced long range rocket launcher system. It is mounted on a highly mobile 6x6 truck. Okay, it is designed to engage multiple targets simultaneously at ranges. अलगा अलगा रेंजेस रे अलगा अलगा टारगेट रे ओके तमे सेट करि परिबो. मल्टीपल टारगेट्स गोटे एका थरे के तमे सेट करि परिबो इन द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम. इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू ए सिंगल टाइप ऑफ एम्युनिशन it uses interchangeable modular pods that can fire a variety of munitions. ओके तमे सेथरे चाहिले 122 mm रो रॉकेट्स यूज करि परिबो. तमे 306 mm रो मिसाइल यूज करि परिबो. तमे माने 150 किलोमीटर पर्यंत थ्रो करि परिबो. तमे 370 mm रो मिसाइल यूज करि परिबो. तो बहुत माने तार कैपेबिलिटी अछि. तमे अलगा साइज रो मिसाइल अलगा रेंज रो मिसाइल सब तमे यूज करि परिबो से गोटे लॉन्चर सिस्टम रे. ओके सो द सिस्टम इज बेस्ड ऑन एल्बिट सिस्टम्स. एल्बिट सिस्टम सहित कोलाबोरेट करके बनैछन्नी तांकर सिस्टम ता हैला कोन प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम. ए टेक्नोलॉजी ता हम एल्बिट रो यूज करिछु. इट इज इक्विप्ड विथ ए मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स जीपीएस inertial navigation and digital ballistic computation. Okay, so सूर्यास्त्र भी नाइब सहित रिलेटेड. आउ गोटे कथा भी मन रखियो वायुअस्त्र 1. वायुअस्त्र 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रायल्स एट द पोखरण फायरिंग रेंज मार्किंग प्रोग्रेस इन इंडिया's indigenous defense technology and battlefield capability enhancement. And this Vayu-Astra is also by NIBE Limited. Okay, so Suryastra bhi NIBE Limited and Vayu-Astra bhi tamara NIBE Limited. Okay, the system was also showcased through a no cost, no commitment demonstration. And a test tamara kouthi thila Pokhran firing range Jaisalmer re, but seita tamara hitla integrated test range Chandipur re. Okay, so dita alga alga jinsa. So during the trials sorry, Vayu-Astra successfully conducted an anti-personnel strike using a 10 kg warhead, destroying a target located 100 km away in a single attempt. Okay,
एंड एठी भी तमरो इजरायली टेक्नोलॉजी ही यूज करा जाईछि बुझ परछो ओके सो इबोला आउटब्रेक देखिया को मिली छि कांगो रे एंड मन रखिबो ए जो कांगो रिपब्लिक रे ओके रिपब्लिक ऑफ कांगो रे ही तमरो प्रथम थर पे इबोला वायरस देखा जायतला सबुडु फर्स्ट थर भी तमरो कांगो रे ही देखा जायतला एबे भी तमरो कांगो रे ही आउटब्रेक ता देखा जायछि सो न्यू इबोला आउटब्रेक हैज emerged in the Democratic Republic of Congo's Eastern Ituri province according to the country's health ministry and 65 death till now तांकर हे सरलानी तो इबोला is a very severe and deadly viral disease right Ebola virus हमें सब जानी चो it is a viral disease which is caused by a group of viruses known as ortho Ebola viruses ortho Ebola viruses को ही पूर्वरु इबोला वायरस को जाउथला एबे तांको ऑर्थो इबोला वायरसेस भी कहा जाउची बिकॉज़ तांकर भी अलग अलग कैटेगरी अछि इबोला वायरस रे भी अलग अलग कैटेगरी अछि सो इट इज अ सीवियर कंटेजियस डिजीज ओके जनकठु आउ जनको हेई परिबो एंड ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स दैट मींस तमरो इबोला रे प्रथम थर पइटा हम कहली इबोला ता तमरो 1976 रे प्रथम थर पे सेही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रे देखा जाइतिला ओके एबे जोठी देखा जाइछि प्राइमरीली अफेक्ट्स रिमोट विलेजेस इन सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका इट इज नोन एज हेमोरिक फीवर वायरस बिकॉज इट कैन कॉज प्रॉब्लम विद द क्लॉटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी ओके एंड लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग as blood leaks from the small blood vessels so it is a deadly disease right viral disease and it kemite transmit huye so it is transmitted from people transmitted to people from wild animal fruit bats ro he paribo porcupines or non human primates tamaro animal to hela zoonotic disease then it can spread to the other human population also but केमिति हे परिबो एटा मन रखिबो केमिति ट्रांसमिट हुए बोला ह्यूमन टू ह्यूमन केमिति ट्रांसमिट हुए थ्रू ब्लड हे परिबो थ्रू सिक्रेशंस हे परिबो थ्रू ऑर्गन्स हे परिबो और थ्रू अदर बॉडीली फ्लूइड्स हे परिबो ओके बट थ्रू एयर हे परिबो नहीं इबोला कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय एयर प्लीज रिमेंबर दिस ओके किछि गोटे फ्लूइड जति माने तमरो कांटेक्ट रे आसुची गोटे कंटामिनेटेड पर्सन थारो सेक्सुअली हो किंबा ब्लड थ्रू हो केमिति भी हो सेही थ्रे ही तमरो इबोला टा स्प्रेड हे परिबो कंटाजियस जो होची कंटामिनेट हे परिबो बट इट इज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर इट इज इंपॉर्टेंट ओके एटा मन रखिबो इट इज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर okay infected individuals are not contagious during the incubation period and become infectious once they begin to develop symptoms जब तबले तांकर symptoms देखा जिवो सेबेठु तांको हमें कहि परिबो कि they are contagious okay they remain infectious as long as the virus is present in the blood incubation period is generally 5 to 15 days 21 days पर्यंत भी हे परिबो symptoms कोन fever diarrhea vomiting bleeding and often death okay the average Ebola disease case fatality is around 50% and there is no known cure for Ebola there is no cure for Ebola there are no approved drugs or vaccines available to treat the Ebola virus disease although experimental vaccines and therapeutics are being tested okay so recovery seems to depend in part how much virus a person was initially exposed to how early the treatment started and on the patient age and immune response पर depend करिवो okay chances of survival can be improved with early supportive care current therapy consists of maintenance of fluid and electrolyte balance and the administration of blood and plasma to control the bleeding okay जेहेतु internal bleeding हुए so that is why it is a very deadly disease बोली आपको कहबो हल ओके सो आप पढ़िबा ना ओके पढ़ देबा सो Ganges soft shell turtle India's first satellite tagged Ganges
soft shell turtle jar scientific name hela Nilsonia gangetica. It was released in the Kaziranga National Park and Tiger Reserve on May 15th. Okay, May 15th 2026 रे आमे celebrate कलु endangered species day. एटा मन रखिबो. Okay, this year May 15 रे आमे celebrate कलु endangered species day. Okay, now जेतु endangered species day रे ताकु आमे release कलु काजीरंगा national park रे, that means a particular species टा हमर endangered list रे हिथिबो. Okay, in the IUCN red list it is under the endangered category, and Wildlife Protection Act 1972 रे schedule 1 माने highest legal protection category रे हमरो ए Ganges turtle टा अछि. Okay, so it is जो माने कोन satellite tagged वाला जिंसटा, it is an initiative by the Wildlife Institute of India in collaboration with Kaziranga authorities and Assam Forest Department, and it is funded by the National Geographic Society. Okay, so scientific name mano rakhibo, IUCN red list re mano rakhibo, and Wildlife Protection Act re ko category re aschi, ko schedule re aschi, sena mano rakhibo. So differentiated from other riverine turtles by distinct arrowhead shaped markings on top of the head. Okay, on top of the head they have some arrow like markings, and so it will differentiate kara jaye. A major river predator also feeds on the dead and decaying animal matter. Found in large river, lakes and reservoirs in Assam, the Brahmaputra river basin is a key habitat. Okay, so tanku habitat loss ro threat rochi, tanku poaching ro threat rochi, fishing net ro accidentally entanglement ro threat rochi, or pollution and riverine development ro threat rochi. Okay, so just satellite tagging kara hai chi, तार main objective कौन, basically to understand the seasonal movement patterns, the home range, कौन जाऊ चंदे, कौन कर चंदे, हेलो, and identify the critical habits, कोठी तंगे nesting करू चंदे, कोठी breeding करू चंदे, ये सब जिनसे बड़ा का संग मने जानी परिबे. जिम्ते GPS लागिला हमें सब जिनसे तम जान करो location वगैरह सब जाना, समझे, ये मन को tag करा जाएगी, so that तंकरा सब behavior study करे हावो. Okay. So a healthy adult turtle captured fitted with satellite transmitter under veterinary supervision, released along the northern bank of Brahmaputra. Assam is one of the world's top priority area of in freshwater turtle conservation. Of the 8 soft shell turtles reported from India, 5 are from the Kaziranga landscape. Hello. तो इंडिया रे वर्तमान रिपोर्टेडली जदि आमे देखिबा 8टा सॉफ्ट शेल टर्टल आमे देखिया को पाऊ, से भितर 5टा तमरो काजीरंगा रोही बिलोंग करनते. ओके, इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इज एंडेंजर्ड स्पीसीज डे May 15, ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 3rd फ्राइडे ऑफ May. तो सेमते कि स्पेसिफिक डे नहीं, एवरी मे रो 3rd फ्राइडे रे तमे सेलिब्रेट करो. तो ए ईयर इट वाज ऑन May 15. It raises the awareness about the importance of protecting the endangered species, first proclaimed by the United States Congress in 2006. Okay, so 2006 रे तांगे एटा start करथिले, and now it is observed globally. So Ganges soft shell turtle is in the endangered list in the schedule 1. Satellite tagging माने कोन, use of satellite transmitters to track the animal movement and habitat use. Okay, Kaziranga National Park hoji tamara gote UNESCO World Heritage Site, and it is also known for the one-horned rhinoceros. Wildlife Institute of India koti hoji tamara, it is a Dehradun based autonomous institution under the MOEFCC. National Geographical Society je ki funding koruchi yaro, it is an international non-profit funding conservation project. And endangered species day every 3rd Friday of May we celebrate the endangered species day. Okay, then last is our sehat mission. Sehat mission ro mu kichi lekha rakhini. Sehat mission kono, sehat ro full form hela tamaro sustainable, equitable, healthy, affordable and transformation. Okay, so basically India रे जो healthcare approach अच्छी, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड टू हमको मूव करार अछि
प्रिवेंशन हो जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो सेहत मिशन रो मेन एम है सेटा है, एंड इट इज ए नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन आउ पब्लिक हेल्थ। एथे गोटे जिंस मन रखिबा, इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन दिस टू, आईसीएआर आउ आईसीएमआर, एमानकर दी जनकर जॉइंट मिशन होची सेहत मिशन, जो आमे कहूछु फार्म टू प्लेट, फार्म रे ही तमरे रेस्टोरेंट गुडा को बना होची, राइट? तो सस्टेनेबिलिटी भी रहूची, न्यूट्रिशन भी रहूची, एंड तमरो सेटा को केमते तमे रिसर्च रे यूज करि परिबो, ओके? एंड इवेंचुअली हाउ कैन यू बिल्ड गुड हेल्थ, सो दैट तुमको ट्रीटमेंट कथा भाबिया को पड़ेबनी, प्रिवेंशन कथा ही तुम भाबिबो, तमे भलो खाइले भलो ही रहइबो, राइट? So through this integrated approach, Sehat Mission aims to achieve nutritional security, disease prevention, better public health outcomes. Okay, so this was all about today's class. वैसे किसी टॉपिक ना थिला, so yeah, जो माने भी, by the way, if anybody of you know who is selected, मो तरफ कंग्रेचुलेशन कहीदेव, एंड तुम को भी नाटा आसार अच्छे ना, सो इथर लगी जाओ पूरा जोरसोर से प्रिलिम्स पे, जो मैंने भी नेक्स्ट ईयर दब से मैंने भी एबटू ही लगी जाओ, बिकॉज कंपटीशन डे बाय डे बहुत हार्ड हो। ओके, सो या, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट एवरीवन। Thank you.